In second unit, the first part is about application or use of psychodiagnostic tests in various settings. Specifically, in syllabus which they have mentioned or given, that is general medical setting, psychiatric setting, educational setting, and fourth one is legal setting. Uses of psychological or psychometric psychodiagnostic test in all these four areas. Of course, we are going to study and discuss in detail, but I want some inputs from you. As per your guess, opinion, idea, काय बरं use असेल? How we can apply psychometric tests in these areas? Any guess? Anyone can try. See why I am asking. एक म्हणजे इंटरॅक्शन बेस्ड असायला हवं असा एक थॉट किंवा एक अप्रोच नेहमी असतो अँड प्लस स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यू पर्पज इलॅबोरेटिव्ह अंडरस्टँडिंग इट विल हेल्प यू अ लॉट. कारण एमसीक्यू मध्ये आपण काहीतरी लिहिलं हे डिस्क्रिप्टिव्ह सारखं आणि मग ऍटलिस्ट हे 10 पैकी 2-3 मार्क्स मिळतील या फिर 4-5 मार्क्स का एक कंटेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा. They test are application oriented knowledge, so they frame the questions accordingly. So जेवढं इंटरॅक्शन मधून किंवा डिस्कशन मधून होईल तेवढं ते आणखीन पुढे स्टिम्युलेट होईल. आणि जेव्हा आपलेच फ्रेंड्स काही इनपुट्स देतात, आय डू एग्री की अनेकदा असं होतं की टीचर्स पेक्षा ते आपल्या फ्रेंड्सनी जे सांगितलंय ना ते आपल्या जास्त चांगलं लक्षात राहतं. इट इज लाईक अकॉस्टिक कोडिंग in terms of memory. So yes, over to you. Any idea how test it can be applied in all these areas? Yes. Yes, sir. In first example, like general medical setting, हम डिप्रेशन या एंजाइटी का साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्सन को देके you can get a result कि the person is on what level on the basis of depression, on Yes. what scale. So accordingly, we will give him or her that medication. In psychiatric, psychometric test can be used for example, if a person is suffering from OCD, तो psychiatric मतलब सब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे कि अभी वो एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा, मतलब उसमें OCD हो गया या कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जैसे कि क्या पैरानोइया या कोई फियर ऑफ समथिंग, वहां पे हम लोग जैसे MMPR दे के हम लोग चेक कर सकते हैं कि इस पर्सन इज समथिंग फ्रॉम सम मेडिकल प्रॉब्लम. और एजुकेशनल में हम लोग पर्सन के स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस का एप्टीट्यूड टेस्ट देकर हम लोग कर सकते हैं कि उसकी क्लास में अगर उसका परफॉर्मेंस लो है तो क्या उसे इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है या ADHD है, वो हम चेक कर सकते हैं एजुकेशनल सेटअप में. Yes. और लीगल सेटिंग में जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल है, मतलब किसी ने क्राइम किया है बट हम उसको अपोज कर सकते हैं. जैसे कि वो एक पिक्चर था मेरे पापा नाम का कोई समथिंग पिक्चर है, तो उसमें जो अजय देवगन है वहां पे उसकी एज मेंटल एज 7 years ओल्ड थी और उसकी बेटी इज नाउ 7 year old. तो वहां पे लीगल कस्टडी की उसके जो दादाजी थे वो बोलते थे कि अब ये बच्चे को संभाल नहीं सकता, तो ही वांटेड कि मुझे ये लीगल कस्टडी चाहिए वो बेटी मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर की, पर उसे भी रखना. तो वहां पे हम लोग लीगल सेटिंग में यूज कर सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट. Yes, correct, absolutely right, Khushi. So also legal setting, you can also check if the person is actually mentally unstable. Sometimes criminals use that, in their defense, ki whatever they did, it's because like they were mentally unstable. So you can actually choose, like, you can give them tests, and through the test it will be decided if they're actually actually mentally unstable or not, or kitna they are unstable, probably like that. Okay, correct. Yes. अजून कोणी?
Sir, mostly in Yes. psychiatric setting, person suffering from neurotic disorders are administered, like schizophrenia वगैरह हो गया. Because for these disorders you have to prescribe drugs. There is no other option. तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का भी रोल इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, फैमिली काउंसलिंग वगैरह वगैरह. बट ड्रग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो साइकेट्रिक सेटिंग में वो वैसे डिसऑर्डर्स एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं. इवन इन एजुकेशन, जैसे खुशी ने बोला एप्टीट्यूड वगैरह, एलडी वगैरह भी या एमआर वगैरह भी, आईक्यू वगैरह भी वो सेटिंग में यूज किया जा सकता है. या एडीएचडी, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो वो पर्टिकुलर फील्ड में यूज किए जा सकता है. इवन मोटर डिसऑर्डर्स वगैरह. Right, absolutely right. Correct. Sir, in general medical Yes, settings, sometimes जो symptoms है patient के, there is no root cause or physical cause for it. So यहाँ पे psychosomatic tests can be used. Excellent, correct. One of the example is especially the trend, it is quite common in western countries, आणि आता थोडं हे metropolitan cities मध्ये पण हळूहळू ते वाढतंय, that they have support group system in the sense those people or those patients who are suffering from that particular terminal illness, these patients, they come together at least once in a month and they just share their views or their ideas with each other, how they are coping with that particular illness, किंवा ट्रीटमेंट काय आहे, किंवा तुमच्या डॉक्टरांनी काय सांगितलंय, आम्ही काय डाएट फॉलो करतोय, असं वगैरे वगैरे. And because of that, it so happened that त्यांना तो एक सपोर्ट मिळतो, that we are not alone, I am not alone, there are other people who are also suffering and having the same disease. आता rightly as she said, सुरभी, की असे पण इलनेसेस आहेत किंवा असे पण पर्टिक्युलर डिसीजेस आहेत की तिथे एक्झाम्पल कॅन्सर, एड्स किंवा काही आणखीन असेल. इन ऍडिशन टू दिस, these patients, they also suffer from anxiety, depression, or some any other psychological issues. These issues, they are not that much primary, but they are contributing to that particular illness, because as we know in terms of health psychology and positive psychology, our mood, it is most important factor in our recovery period. तो ऐसे केसेस में to understand the psychological state of mind, that how far the patient is able, किंवा अगदी बेसिक ऑपरेशनच्या आधी सुद्धा ते डॉक्टर काय चेक करतात, तर आणखीन बीपी वगैरे काही आहे का, आणि बीपीचा एक रूट कॉज काय असतं की खूप स्ट्रेस, खूप टेन्शन किंवा काय आणखीन डिप्रेशन वगैरे असेल, मग त्याच्याने सुद्धा बीपी शूट होते. सो अगदी बेसिक टू स्टार्ट विथ इट जरी एक आपण कन्सिडर, सो टू स्टार्ट विथ असं जरी एक आपण कन्सिडर केलं, so like in this way also it is used, and that's why health psychologists are there. Specific post काही hospitals मध्ये आहे, called as health psychologist. They study the recovery pattern, aspects, factors which are affecting and or contributing to all these tests, and to understand all these things scientifically, objectively, that too, uses of psychological tools, it is most important. We'll again discuss the same point, but आता आणखीन second, third, fourth to start with it. Psychiatric, for example, in psychiatric setting also, in three ways we can use all these tests or various tests. First thing is to understand the severity of that particular disorder.
whether the person is really having that particular disorder or not. And if the person is really having it, then to what extent? Uski severity kya hai? Is it at low level, moderate, or is it so that it is acute, chronic, high level pe wo particular disorder hai? And for that, some forms are there, some kind of checklists are there. 2-3 checklists we are going to study today. Second approach is about to diagnose a disorder. Psychiatrists, they apply some tests or they may also conduct their interview. Apparently ते आपल्याला असं वाटतं की ते आपल्याला फक्त प्रश्न विचारतात किंवा आपल्याशी गप्पा मारतात. But they have their some tools किंवा checklist के अगर ये ऐसा ऐसा है तो उसमें वो है नहीं. So like for example, एक ढाके सरांची मेथड अशी, मी एक नेहमी ढाके सरांचा रेफरन्स का बरं देतो लेक्चर मध्ये, बिकॉज उनके पास एक इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने रादर वो दी इसलिए, आणि ते साधारण एक वो कुछ अराउंड 6-7 मंथ्स का वो एक इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन था उस वक्त. सो इसीलिए एक उनकी वजह से, एंड अनदर पर्सन, अनफॉर्चुनेटली वो मैडम अभी नहीं है, बट अचवल मैडम, उनकी वजह से बहुत कुछ एक ऐसे प्रैक्टिकल सीखने को मिला. सो फॉर एग्जाम्पल, सो ढाके सरांचा एक अगदी बेसिक पॅटर्न असा की तो पेशंट आल्यावरती ते त्याला असं सांगायचं की दोन्ही हात असे सरळ ठेवा, ये दोनों हाथ ऐसे सामने स्टेबल करके दिखाओ. इफ द पर्सन इज रियली हैविंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इम्बॅलन्सेस, ते थोडंसं शिवरिंग किंवा ट्रिमरिंग असं होतं. हा बॅलन्स काय रिफ्लेक्ट करतो की काहीतरी इथे इम्बॅलन्सेस आहे. ओवरऑल कैसे चालू है, अच्छा पिच एज कंपेयर टू अर्लियर मंथ, अभी कैसे फ्रेश लग रहा है आपको, कितना फ्रेश लग रहा है. समटाइम्स इजीली स्किलफुली ही यूज द स्केल ऑल्सो. स्केल इन द सेन्स, 1 रुपयापैकी किती बरं वाटतंय मग आता, की आता गावाकडची जर का लोक असतील, रुरल बॅकग्राऊंड जर असेल, 8 आण्यापैकी किती बरं वाटतंय, मग 4 आणे बरं वाटतंय, थोडंसं बरं वाटतंय किंवा खूप बरं वाटतंय किंवा काहीच बरं नाही वाटत आहे. ऑटोमॅटिकली ह्या छोट्याशा साध्या इंटरव्ह्यू मधून किंवा क्वेश्चन आन्सर मधून ही कॅन इझिली अंडरस्टँड प्रोसेस अँड प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट. सो इंटरव्ह्यू, इवन पेपर पेन्सिल टेस्ट, some kind of projective test, and even another way to use all this test in terms of psychiatric setting, that is to monitor the treatment before and after, before, during and after, pre and post, to monitor whether whatever the treatment we are applying, is it really on the track or not. And even sometimes it is used to suggest further treatment plans. And that's why these things are important. One of the tests which you might have studied, that is Rorschach ink blot test. It is a projective test. आपल्याला या सिलेबस मध्ये पण आहे 3rd चॅप्टरला. And another thing is it visible to you, PDF? Yes, sir. Okay. Now see this form. Clinician rated dimensions of psychosis symptom severity. अभिने जसं एक आता सांगितलं की स्किझोफ्रेनिया असेल किंवा काही आणखी सिव्हिअर डिसऑर्डर्स, मग तिथे ड्रग्स द्यायचे आहे किंवा मेडिसिन्स आपल्याला प्रिस्क्राईब करायचं आहे. This is a basic simple checklist which an intern or even a receptionist can ask either the patient or his relatives की तुम्ही फक्त प्लीज भरून द्याल का. हा, प्रोव्हाइडेड दे शुड हॅव नॉलेज अबाउट इट. रिसेप्शनिस्ट म्हणजे फक्त काल अप्लाय केलाय आणि आजपासून तो लगेच जॉईन झालाय आणि त्यांनी फॉर्म दिला असं नाही. दे आर ट्रेन, or they should be aware of the details, its meaning, its variations or so.
So now you can see इथे disorder नाही mention केलंय कुठलंही, but see hallucinations, not present, equivocal, present but mild, present and moderate, present and severe. Accordingly, the person can just put a tick mark कि okay हाँ ये इतना severe है, बहुत कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है. Delusions, same thing. Disorganized speech, irrelevant काहीतरी बडबड आहे असं आहे का, वर्ड सलाड का आहे का. सो खाने में जैसे सलाड होता है सब कुछ एक मिक्स होता है, वैसे ही कुछ भी irrelevant, jumping from one topic to another without having and giving any kind of relevance reference. So like that. And then uske 0 to 4. Abnormal psychomotor behavior. मधनच काहीतरी विचित्र वागतायत का, हात वारे काही आहे का, इकडे तिकडे बघून असं काही आहे का. निगेटिव्ह सिम्पटम्स इन द सेन्स उसकी डिग्रीज है. सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर, खुद होके कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं. Impaired cognition, cognitive function not clearly outside the range expected for age. They have specified expected for age. So 4-5 साल का बच्चा अगर ऐसे नॉटी बिहेवियर करता है या फिर मिस्चियस बिहेवियर करता है, it is absolutely normal. At the age of 35 or 45, if the person is behaving in the same way, then it creates a biggest particular question mark. के असं का बरं विचित्र वागतात हे काका या काकू वगैरे वगैरे. And like that. Depression, occasionally feel sad. Automatically it speaks about a degree. Present but mild. Frequent periods of feelings very sad, down, moderately depressed. Is it so that he or she is hopeless? एक पेशेंट आया था और वो शिफ्टिंग का इशू था. मीन्स फ्रॉम नॉर्थ ऑल ऑफ अ सडन he has been forced to shift his entire family, and so ते इथे ओझरला शिफ्ट झाले होते. और फिर वो अगेन जॉब का इशू एंड ऑल सब कुछ. So the way he was sitting in front of sir, it was like this. शर्ट काहीतरी आउट आहे, इन वगैरे काही असं केलं नाहीये, नीट भांग वगैरे नाहीये, कोम काही असं केलेलं नाहीये. अँड इव्हन आयसाइट बी एसी. उगाच रडू येत होतं. फ्रिक्वेंट क्राइंग स्पेल, इट इज वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ बीडीआय, बिग्स डिप्रेशन इन्वेंट्री. क्या होगा, सब कुछ तो खत्म हो गया. So the tone was like that. Uses of test in psychiatric setting. That point we are focusing, and for that checklist. This is just a checklist. But now suppose अब अगर ऐसी checklist patient ने या फिर उसके informants या फिर relatives है, before entering into the cabin, if they have fill up the form like this. आणि जे इंटर्न असतील, हाताखाली कोणी काही स्टुडंट किंवा असिस्ट करणारे असतील, ट्रेन रिसेप्शनिस्ट जर असेल, उन्होंने इसका स्कोरिंग किया और वहां पे वो कि हाँ इधर ये 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका भी 4 है. Concerned psychiatrist, now he is having a clear-cut picture that what exactly the patient is about, and accordingly he can quickly frame the questions. सो मग तिथे टायमिंग पण रिड्यूस होत आहे आणि फोकस्ड असेसमेंट तिथे होईल. हेडिंग इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट. क्लिनिशियन रेटेड डायमेन्शन्स ऑफ सायकोसिस सिम्पटम. एव्हरीथिंग इट इज सायकोसिस. सेकंड थिंग इज अबाउट अनदर एक्झाम्पल फॉर दिस, दॅट इज Is it visible? Level 1 wala? Yes. Yes. Okay. DSM-5 self-rated level 1 cross-cutting symptom measure, especially for adult.
Now see, little interest or pleasure in doing things, and then like टेस्ट मध्ये जसे ऑप्शन्स असतात सो वैसे नन, स्लाइट, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, नॉट एट ऑल, रेयर, less than a day or two, several days, more than half the days, and nearly every day. Severity. Feeling down, depressed, hopeless, 0 to 4. Feeling more irritated, sleeping less than usual, starting lots more, बहुत कुछ काम कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? और जो रिस्की है, feeling nervous, anxious, panic. Is it so that you are escaping something? Unexplained. दुखतंय काहीतरी, काय दुखतंय ते काही सांगता येत नाही, असं होतंय का कधी? सो हे एक्सप्लेन पण करता यायला पाहिजे. Thoughts of actually hurting yourself. In technical term, it is called as self-harming behavior. One of the important symptom of suicidal tendency or suicidal thoughts. Unpleasant thoughts, urges, images that repeatedly enter your mind. The criteria of abnormal behavior is the behavior which is not under our control can be considered as abnormal behavior. नहीं सोचना है लेकिन फिर भी वही थॉट्स बार बार दिमाग में आते हैं, क्यों हो रहा है नहीं पता चल रहा. Feeling driven to perform certain behaviors or mental acts over and over again. Like आता खुशी जे म्हणाली की OCD, सारखं घर साफ करावं असं वाटतंय, हमेशा वो एक लैच हम लगाते हैं लेकिन बार बार ऐसा लगता है कि और 3 बार चेक करेंगे, किंवा क्लीनलीनेस असेल किंवा काउंटिंग असेल और एनीथिंग लाइक दैट, रिपीटेटिव एक्ट्स. सो दिस थिंग checklist, and then accordingly scoring and interpretation, everything it is given. So the domain, this is only for patient or relatives, and this thing it is for clinician or clinical psychologist. The first area it was related with depression. Second one, it was for anger, mania, anxiety, somatic symptoms, suicidal ideation, psychosis, sleep issues, memory, repetitive thoughts or behavior. So see, clear cut. For the patient, it is just a statement or inquiry statement. But for us who are aware, who are expert in this, by statement वाचूनच समजेल की अरे हे OCD आहे, हे डिप्रेशनचं आहे. Like that. The personality functioning and even substance use. And third form is about, अभी एडल्ट के लिए जो हमने डिस्कस किया वैसे ही चाइल्ड रेटेड फॉर्म भी है एक और. Is it visible? Child age 11 to 17? Yes, sir. Okay, great. So see, and even instructions are also important. Questions below ask about things that might have bothered you. For each question, circle the number that best describe. You have been bothered by each problem during the past 2 weeks. किसी एडोलेसेंट की साइकेट्रिस्ट के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चालू है, and pre, post, and even in between also they can apply, they can use this particular form. 1 सितंबर को ट्रीटमेंट के लिए जब फर्स्ट टाइम आए थे तब उन्होंने इधर टिक मार्क किया था. 15th of October को फिर से हमने सेम फॉर्म दिया, तब उन्होंने ये मार्किंग किया यहाँ पे. And 1st of Jan को again we have given the same form, तब उनका मार्किंग यहाँ पे आया. That means frequency, duration and intensity is getting lesser regarding that particular issue. Of course, in the sense it is a valid evidence or proof कि हाँ जो कुछ भी हमने ट्रीटमेंट या फिर काउंसलिंग हमने दिया है, प्रोवाइड किया है, it is on the right track. और 2 महीने, 1 आध महीना अगर कंटिन्यू करते हैं, ये 1 से 0 भी होगा.
Or in some another example, 3 months we are giving a treatment, but still every month the person is marking to this particular area. So ते 4ला stick करतोय. Is it so that he is not able to understand the meaning? Is it so that he is answering very casually? Or is it so that treatment appropriately workout ही नहीं हो रही है? If it is so, then why? We have to investigate that too. का बरं आपण जे काही अशा ट्रीटमेंट देतोय किंवा मेडिसिन्स, आपण नाही पण सायकॅट्रिस्ट किंवा आपण जे काही काउन्सिलिंग देतोय और प्रोव्हाइड करतोय, का बरं त्याचा इम्पॅक्ट होत नाहीये? आणखीन कॉन्ट्रीब्युटरी असे फॅक्टर्स कोणते? लाईक दिस वी कॅन think about it. Had less fun doing things than you used to. So area 4, and now see domain, it is depression. And that's why the day before yesterday I emphasized again that conceptual understanding, it should be important, skillful understanding. वर्ड टू वर्ड जैसा बुक में होगा वैसे ही रियल लाइफ में कैसे साएंगे, ऐसे नहीं. बट ये हमारा स्किल है कि हाँ, स्टेटमेंट भी अगर हम पढ़ते तो हमें पता चलेगा कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली दे आर मेजरिंग, और यू नो की ते काय टॅग करताय. म्हणजे मग तिथे तो पर्टिक्युलर डिसऑर्डर, फीचर्स, सिम्पटम्स, DSM क्रायटेरिया अँड असेसमेंट पर्टिक्युलर प्रोसिजर, एव्हरीथिंग इट इज गेटिंग क्लिअर. स्टार्टेड लॉट्स मोर प्रोजेक्ट. ते आधीचं जसं स्टेटमेंट होतं सो तेच. Felt nervous, anxious, scared, not being able to stop worrying, not being able to do things you wanted to or should have done because they made you feel nervous. Now any guess हा एरिया काय मेजर करत असेल, or this domain is for what? Any guess? Anxiety, okay, let's see. Correct. Constantly thinking about past is what is depression, and constantly thinking about future is what is anxiety. क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, like that. So all these things are there. Repetitive behavior, psychosis, age wise सुद्धा है वेगळं, and even sequence it is different. Somatic symptoms. Now आता हे अंडरस्टँडिंग आपल्याला हवं की ॲडॉलिसन्स जर आहे, सोमॅटिकला खरंच सायकोलॉजिकल बेस आहे की काही आणखीन हॉर्मोनल इम्बॅलन्स आहे आणि ते इम्पॉर्टंट रोल असं प्ले करताय, लाईक दॅट. सो role of psychodiagnostic test with reference to psychiatric settings. Understood the point? होता है clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Now, second area is about educational setup. Any idea IEP का फुल फॉर्म क्या हो सकता है एजुकेशनल सेटअप में? IEP. Anyone? It is called as individualized education plan or program. Individualized education program. Yes. So by applying psychological tests in educational setup, definitely we can understand, or we can have information about strengths of that particular students, strengths, potentials,
किंवा त्याच्या जमेच्या बाजू थोडक्यात. अँड अकॉर्डिंगली वी कॅन स्ट्रक्चर द टीचिंग प्लॅन, सिलेबसचा यूज किंवा त्या वेळेस ते अप्लाय करताना. सो अगेन हिअर बेसिक फंडामेंटल ऍप्लिकेशन इज अबाउट जीन पियाजेस थेअरी. सो कॉग्निटिव्हचा रोल पण कसा आहे. In this way, you can guide teachers also, how to communicate with students, how to understand them, how to plan the teaching plans, everything. At the same time, by administering appropriate standardized couple of tests in educational setup, we may also have access about limitations or weaknesses, lacunas of students. Why that particular one student, though he is exceptionally good in all other subjects, but still उसको मैथ्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसका मैथ्स अच्छा क्यों नहीं है. We can administer the test and we may have scientific evidence for it, objective that too. Is it so की फक्त इंटरेस्ट नाही आहे, इज इट सो की त्याचे बिलीव्स काही वेगळे आहेत मॅथ्स बद्दलचे, इज इट सो की मॅथ्स टीचर बद्दल काही इश्यूज आहे म्हणून अकॉर्डिंगली मॅथ्स आवडत नाहीये, की आणखीन काही वेगळं हे कॅल्क्युलेशनच नाही समजत आहे. इन टेक्निकल टर्म इट इज कॉल्ड एज डिस्कॅल्क्युलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैल्कुलिया. सो कैलकुलेशन मध्ये गड़बड़ है. जो प्लस है उसको वो ये मल्टीप्लिकेशन के साइन ऐसे परसीव कर रहा है. जे माइनस है तो मग तिथे डिवाइडेड ची साइन असं म्हणून परसीव करतो. किंवा मिरर इमेज, टीचर पी लिखते हैं लेकिन वो बंदा क्यू परसीव कर रहा है. टीचर इज राइटिंग एम, द पर्सन और द चाइल्ड इज परसीविंग इट एज डब्ल्यू. Mirror image, N's a U, B's a D, like that. Apart from this, aptitude also. If we are able to apply appropriate aptitude test with intelligence test, then we can have access that in which area the child can develop very well, provided if he is having access about appropriate education or training. तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग और सो. आता अभी तक का अगर एक ट्रेंड कंसिडर किया तो ये सब एकदम टिपिकल हो गए. आता काय आहे, आता गेमिंग बद्दल काही करू शकतोय का, ऍप डेव्हलप करू शकतोय का, मीडियाच्या अँगलने काही ते इंटरेस्ट इन्क्लाइंड आहे का त्याचा. एव्हरीथिंग वी कॅन tap at appropriate time. So here also we are applying standardized psychological tests or tools, and we are having appropriate knowledge of diagnosis. Imagine रियल में किसी इंसान को आर्ट्स में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड है, लेकिन टेस्ट गलत चूज की गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी गलत हुआ, इंटरप्रिटेशन भी गलत हुआ, और रिपोर्ट ऐसे लिखा गया दैट ही विल परफॉर्म वेल, वेरी वेल इन साइंस. बेस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर रिपोर्ट, his entire life is going to be biggest question mark. इसमें तो लिखा था साइंस में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन साइंस में तो ये 2 साल फेल हुआ, इयर ड्रॉप 2दा बसला त्याला इंजिनिअरिंग मध्ये. असं का बरं? क्योंकि टेस्टिंग ही अप्रोप्रिएट नाही हुआ, असेसमेंटच काही हे व्यवस्थित नाही झालं म्हणून. अँड इव्हन टू मॉनिटर अ पर्टिक्युलर प्रोग्रेस. मग तोच पॉईंट जसं आपण सायकॅट्रिस्टच्या वेळेस डिस्कस केलं. सो इन द ड्यू कोर्स इन दॅट पर्टिक्युलर इयरच्या स्टार्टिंगला टेस्ट ऍडमिनिस्टर केली, सेकंड सेमेस्टर शुरू होण्याच्या आधी आणि सेकंड सेमेस्टरच्या नंतर. सो 3-4 बार हमने वो पर्टिकुलर टेस्ट एडमिनिस्टर की, एंड देन फिर ये पता चला कि हाँ उसके एकेडमिक स्ट्रेंथ्स आर दे डेव्हलपिंग, इज इट सो दैट ही इज वर्किंग और नॉट, किंवा काही आणखीन वेगळं. एंड प्लस इसका एक और यूज है, दैट इज थेरेपी. इसका एक बेसिक एग्जाम्पल,
सो काल जी केस एक डिस्कस केली होती की वो एक पर्टिक्युलर लड़की है और ते नीट इलाज काही ओपन करता येत नाहीये आणि आणखीन वेगळं इश्यूज आहेत, अंडरस्टँडिंग इश्यूज आहे, स्कूल मधल्या कंप्लेंट्स काहीतरी वेगळ्या आहेत वगैरे वगैरे. तो उसका डायग्नोसिस एंड इवन 4th सेमेस्टर में जो एक आपका केस स्टडी होगा उससे रिलेटेड है. ये तब जो एक पीपीटी बनाया था 10 साल पहले वही है. So see, now just see or perceive this as a only in the form of story. And at the same time, इसमें DSM का रोल कैसा है, थेरेपीज का रोल कैसा है, असेसमेंट एंड इवन डायग्नोसिस का रोल कैसा है, दॅट थिंग हे आपण कुठल्या रेफरन्सने डिस्कस करतोय. युजेस ऑफ टेस्ट विथ रेफरन्स टू सेटिंग्स, सायकॅट्रिक असेल, एज्युकेशनल असेल किंवा काही. Identification or the basic information that the client or patient is a resident of Nasik. Right now she is 14-year-old in 7th standard. फॅमिली हिस्ट्री अगर कन्सिडर करते हैं तो एक मोठा भाऊ आहे, सॉरी एक लहान भाऊ आहे, 3rd स्टँडर्ड मध्ये आहे. ओव्हरऑल 5 जण आहे, हे दोघं आई वडील आणि आजी आहे घरामध्ये. सोशो इकॉनॉमिक स्टेटस इज एव्हरेज. The way they approach to psychiatrists, that lack of concentration. 7वीत असून सुद्धा ती एके ठिकाणी असं बसून काही अभ्यास करत नाही, करू शकत नाही. She is not having interest in writing. Frequently and unnecessarily she is adding or omitting some words. She is facing difficulty in complex motor movements. पटापट पटापट काही हाताने करायचं म्हटलं तर मग ते तिला जमत नाही. And sometimes she behaves aggressively, which her family perceives that it is above the average degree. नुसता राग येतो असं नाही, ती भरपूर रागीट आहे असं. Now considering the case history, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे. When she was 9-year-old, so right now she is 14. 5 years back, parents came to know about the symptoms. Those symptoms which we have discussed की स्कूल मधले प्रॉब्लेम्स आहे, अननेसेसरीली ऍड करते, ओमिट करते, एके ठिकाणी बसून काही अभ्यास करत नाही अँड ऑल. Onset of symptom since last 4 to 5 years and onset of symptoms as stated by client, of course she is not able to answer because तेवढं ते अंडरस्टँडिंग नाही. Another thing is past psychiatric and medical history. No major thing as such के बहुत कुछ मेजर हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह काही झाला है किंवा कुठलं काही ड्रग्स इंटेक वगैरह आहे और फिर इसकी वजह से ये सब इश्यूज है. इट इज नॉट लाइक दैट. सो दिस पॉइंट इट इज NA. दैट मीन्स नॉट ऍप्लिकेबल. फॅमिली हिस्ट्री, असं घरामध्ये कोणालाही काही नाहीये, बट शी इज स्टबर्न अँड फील्स जेलस अबाउट यंगर ब्रदर, लाइक अ कंपेरिंग. आई बाबा त्यालाच का बरं सगळे देतात, वो पेरेंट्स उसी को सब कुछ ऐसे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं लेकिन मुझे नहीं देते. वो भी तो गलती करता है लेकिन उसकी गलतियों को इग्नोर किया जाता है. बट दे ओवरली फोकस unnecessarily, they pay attention to me and that is bothering to me. This is how she used to say. She shares good relations with her parents. बाकी सब ठीक है, बट CA एक कंप्लेंट है. पर्सनल हिस्ट्री इन द सेंस it is only history. Infancy to present, she seems to have normal development except some minor defects in motor movements. उसके बॉडी मूवमेंट्स कंपेयर टू अदर चिल्ड्रंस वो काफी बाद में हुए. बाकी उसका चलना, मान पकड़ना वगैरह जे आहे, स्क्रॉलिंग वगैरह, वॉकिंग एंड स्पीकिंग, एवरीथिंग इट वाज ऑन टाइम. She was referred to physiotherapist and even pediatrician because of these issues. Case history लेते वक्त ये भी पता चला that she is very very creative in handcraft. She is quite interesting about it. Now see MSc, 4th
चैप्टर का पॉइंट. In two settings, when she approached to concern psychiatrist, she was properly dressed up and cooperative. Her speech at that time, it was a bit hesitant. बताए क्या नहीं बताए, फिर कैसे बताए, फिर क्या पूछ रहे, फिर वो सर है क्या, फिर वो डांटेंगे क्या, वगैरह वगैरह. Her mood and effect is different and affect is different. Emotional expressions were appropriate to the thought contents. जो कुछ पूछा जा रहा था, she was quite able to understand, synchronize everything, and she was able to reproduce also. ते बरोबर व्यवस्थित सांगता पण येत होतं. She was aware where she is right now, to whom she is answering, surrounding वगैरह सगळं हे माहिती होतं. Time, place, person, everything. It was there. Appropriateness of awareness, it was also there. And what was diagnosed? Learning disorder, LD. And why it is so? Because see, now, so 10 years back, because it was DSM-4 TR, it was used. The DSM मधले criteria, writing skill issues, हे complaints मध्ये पण होतं. The disturbance in criteria A, writing skills are affected. Unnecessarily addition and omission of certain words, it was there. And multi-excel, earlier the same pattern was there. Access 1 tha, access 2, 3, 4, 5, GF 70, it was very good. General adaptive functioning. Sensory deficits है, ठीक तरीके से motor development नहीं अभी तक develop हुए so far. Access 2, access 4, it was not applicable. Learning disorder specified written expression. Main diagnosis काय केलं? Learning disorder specified with written expression. Use in educational setup in the sense prognosis, because see, remedial teacher. So there is another post in school, especially convent school आता आणखीन असं फेवरेबल किंवा प्रमोटेड आहेत या सगळ्या गोष्टींना. सो in addition to MA clinical psychology, you can also think about some another additional courses about remedial teacher if you are interested in teaching line. So मतलब तो upper hand असल जो slow learner है उनको कैसे सिखाया जाता है, like the role which is played by Amir Khan in तारे ज़मीन पे, by using playway method, clay method असेल or any other way. Remedial teaching. Severity of the disorder, age, continuity of the treatment, family and social support is also equally important. It is not completely curable, but use of psychotherapy in addition to all these things, it will definitely help to a great extent. And therapies, remedial treatment, parental counseling, even behavior therapy. Then definitely we can help the patient, the client or that particular child. So play therapy. क्यों play therapy? क्योंकि जब हमने observation किया केस हिस्ट्री ली तब पता चला that she is exceptionally interested, creative, fond of in creativity, handcraft. Use it as a strength. ती तिची strength आहे. मग 2 मुळे आपण ठेवले आहेत आणि 4 हे भोपळे आहेत. सो टोटल काउंटिंग किती झालं? 4 + 2 कितना हुआ? 6 हो गया. अभी गणपति है तो हमने 5 लड्डूस आरती के वक्त ऐसे भगवान के सामने रखे, तो 3 लड्डूस हम सबने खाए, तो फिर भगवान के सामने अभी कितने लड्डूस रखे हैं, बचे हैं? Let them involve in this kind of interaction. So playway method. सहजपणे मग ते काउंटिंग, ऍडिशन असेल किंवा डिलिशन असेल, इंटू करणं असेल किंवा डिवाइड करणं असेल, इन धिस वे. सो क्रिएटिव्हिटी. मग आपण काहीतरी थर्माकॉलचं केलं, मग ते करत असताना सुद्धा कलर काय आहे, शेप्स काय आहे, ॲनिमल्स. आवर पास्ट स्टुडंट in 2001 he started he started school in Ratnagiri, which is the first school in Konkan region which provides education and psychological services like testing and counseling. Learning Point नावाने रत्नागिरी मध्ये त्यांनी
ती स्कूल ही सुरू केली आहे. ही वॉज पास आउट इन 94 or so. He completed his BA, his BA and MA, आणि मग स्पेशल स्कूलिंग मधले जे एज्युकेशन आहे सो ते कम्प्लीट करून मग आता ते एक एक ऍक्टिव्हिटीज असं तिथे करतात. सो इन धिस वे युजेस ऑफ psychological test in educational setup, in psychiatric setup, in this way it is there. होतंय फॉलो? फास्ट झालं का आज? No, sir. नक्की हाँ, sir. पक्का? हाँ, हाँ. Okay, yes. So, like this, we can use this in these two settings. So, medical का एक हमने डिस्कस किया. On Monday, we will discuss in detail about legal settings. It is like in addition to forensic psychology. To test and even to understand whether the victim or that particular person who is giving statement, to test their psychological state of mind. Eyewitness testimony, how far they are answering honestly or not. What kind of psychological services can be given even in prison. So that is also a role of it. Now here for legal setting, the best example which is known for us, I think that is EPQR test. Are you aware about it? Eisen's personality questionnaire. Yes, sir. करेक्ट. सायकोटिसिझम मेजर होते त्याच्यामध्ये. लाय स्केल आहे. सो नाउ फॉर एग्जांपल 1 सितंबर को 10-12 क्रिमिनल अपने नासिक रोड का जो जेल है वहां पे उनकी एंट्री हुई. We have administered EPQ at that particular time. Then we can understand the level of psychoticism, neuroticism, and some other facets. Accordingly, we can discuss, we can suggest, we can frame some plan. कि अगर अगले 3 महीने के लिए ये 10 क्रिमिनल वहां पे है तो उनके लिए साइकोलॉजिकल सर्विसेज क्या और कैसे ये प्रोवाइड की जा सकती है. Similar kind of planning, it was done by किरण बेदी in दिल्ली तिहाड़ जेल. तो जो कुछ उनकी पनिशमेंट थी उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं. बट इन एडिशन टू दैट उस वक्त उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड टू ट्रेन देम इन योगा. मग ओंकार शिकवला किंवा योगा वगैरे शिकवला आणि मग आणखीन बाकीचं ते काय आपण म्हणू प्रेयर वगैरह आहे वो सब उनको सिखाए. और फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसे पता चला कि उन लोगों की जो ये एबनॉर्मल टेंडेंसी इन द सेंस द क्रिमिनल थॉट्स वो काफी हद तक कम हुए. So whatever she administered in our term, it is called as intervention. Now to study the effectiveness of such kind of intervention, again we can use the test like EPQR, NEO-PI, or any other appropriate test to this particular group. And then we can study कि हाँ ये intervention ऐसा है वो वैसा. And even another way is, so 5 ऐसे criminals है example hypothetical कि 1 September को they have admitted to jail due to some reason. अभी मान लो उनको बेल मिल गई in the month of December. बेल असेल किंवा पैरोल असेल किंवा काय. जेल से छूटते वक्त भी उनको EPQR टेस्ट हम दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. एंड देन वी कैन जस्ट मेक एस्टिमेट कि अगर इस इंसान को अगर छोड़ा what can be his possible future behavior. If right now also he is scoring very, very high on psychoticism and neuroticism, he or she may be a threat to society at large. क्योंकि उसके वो abnormal tendency अजूनही हायच आहे ना. मग काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे. आणि मग जसं लिगल सेटिंग्स मध्ये असतं की अगर बेल है लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार वहां पे आके साइन करना होता है पुलिस स्टेशन में, सिंगम मध्ये जसं दाखवले थे. सो दैट यू नो कि एटलीस्ट वो
ट्रेस तो रहेगा कि हाँ ये बंदा सिटी छोड़ के बाहर नहीं गया है, अगर कुछ होता है तो इसको हम टॅप कर सकते हैं, लाईक दॅट. सो आणखीन काउन्सिलिंगचा वगैरे रोल काय आहे, फॉरेन्सिकचा आस्पेक्ट काय आहे, एव्हरीथिंग इन डिटेल वी विल डिस्कस ऑन Monday at 9 o'clock. Okay? Okay, sir. Have you followed so far? Any doubt? आणखीन काही असं विचारायचं आहे, समजलं नाहीये, or anything to discuss to add on from your side? Okay. So we'll continue on Monday. सर Yes. Yes, Kushi? सर ये सब तो बहुत अच्छे से समझा, बस एक ऐसे जनरल सिली पर्सन टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि हम Yes, लोग जैसे डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है कि पेशेंट जब उनका डिजीज जो है वो एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे वो स्टेज बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है. Correct. वैसे ही आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक्स के पास, डॉक्टर के पास जाना तो इज नॉर्मल, पर यहाँ पे जाना इज वेरी, उनको पुश करना पड़ता है. Yes. तो जो है पहला क्वेश्चन ये है कि जो लोग हैं क्या वो अपने आप, मतलब कि अगर परसेंटेज में देखें स्टैटिस्टिकली, तो कितने लोग हैं जो अपने आप खुद से अपने मतलब कि अपने विलिंगली आपके पास आते हैं एज अ काउंसलर की हेल्प के लिए. और Yes. दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब कि उनका जो एक्सट्रीमनेस है या जो कॉज है उनका सफरिंग है, वो कौन से लेवल पे होने के बाद वो आते हैं. तो ये 2 क्वेश्चंस थे मेरे. Okay. Okay. Kushi, I am very happy to that you ask this particular question. It is considered as it's all about awareness of psychological disorders or awareness about our own mental health. Nowadays, especially youngsters are very, very aware about it. They know के हाँ ये कोविड की वजह से ये इशू है या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज है, सो वी नीड सम काइंड ऑफ हेल्प एंड सो दे अप्रोच फॉर काउंसलिंग. Percentage in terms of statistical figure, if we try to say, more than 60 to 70% youngsters are quite aware and they are absolutely okay in saying कि हाँ हम ये काउंसलर के पास जाते हैं या फिर हम इस पर्टिकुलर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर इशू है. सो बट अबाउट एडल्ट्स इट इज हार्डली अराउंड 30 to 40%. Either they are not aware about it, or even if they are aware, there is a stigma. मैं काउंसलर के पास क्यों जाऊं, अगर मैं उनके पास जाता हूं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर अगर कल को ये चीज किसी और को पता चली तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. So somehow some adults either they are reluctant, or even if they are able or ready to go, and even if they are ready to go, still they are quite in the sense cautious के सर मैं आपके पास आता हूँ लेकिन ये बात किसी को बताना मत, उनको मालूम नहीं है, वो कुछ ऐसे सोचेंगे फिर वैसे बात करेंगे, ऐसा वैसा. So like that, in a way this kind of mixed approach is there. Another thing is, as you ask, that severity जो है या फिर उसकी डिग्री, if in early phase if they approach to counselor, to psychologist or so, then it is completely in the sense under control. But 3-4-5 साल से कॉन्स्टेंटली इश्यूज चालू है फैमिली में या फिर रिलेशन में कंटिन्यूस इश्यूज है, और तब जब के पानी अब यहाँ तक आया है, रादर इधर तक आया है, और फिर सर आप कुछ करो या फिर कोई एक ऐसे बताओ और फिर 2 दिन में हो जाएगा, तो नहीं, देन इट टेक्स टाइम. तो टाइम कंज्यूमिंग ऐसी प्रोसेस है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज willingness of person. It matters a lot, even if it is physical issue or even psychological issue. अगर willingness है
तो ट्रीटमेंट में, इवन काउंसलिंग में रिकवरी वो बहुत जल्दी होती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज क्वाइट अवेयर कि हाँ अभी मेरा ये गुस्सा हो रहा है, ऐसे ऐसे इश्यूज है और वो मुझे कम करना है एंड सो। ऐसे भी हुआ है कि हाँ काउंसलिंग में 1-2 सेशन में भी द पर्सन इज क्वाइट अंडरस्टूड के हाँ नाउ आई कैन अंडरस्टैंड के हाँ ये मेरे बिलीव्स या फिर मेरे इश्यूज कुछ ऐसे हैं और माय एक्सपेक्टेशंस आर क्वाइट unrealistic, so I'm getting disturbed again and again and again. Now I have understood it only couple of settings, and for some people it so happened that 6, 7, 8 सेशंस भी लगे हैं काउंसलिंग में, सो ऐसा मिक्स अप्रोच है। Have I answered to you, Kushi? Yes, sir. Okay. Thank Okay. you. Yes, Yes, sir. sir. Welcome. Thank you so much, sir. Yes. Okay. So we'll meet on Monday at same time with legal setting and even general medical settings. Okay? Take care. Have a nice day to all of you. Thank Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.